dear kids, do you know कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? Well, in this video, we are going to be learning the different move notations of the 3x3 Rubik's Cube and their short codes. और ये स्टेप जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, but I'm sure कि अगर आप सारी important चीजें, सारे move notations and all the important things that we discuss, you note it down anywhere and you see it again and again and you practice it again and again and you listen to this video and each step properly and carefully with your all ears and eyes open and brains open, तो I am sure कि आप सब कुछ understand अच्छे से कर पाओगे as clearly as the day you would be able to understand. Got it? Well, now let us begin learning it. Learning the move notations and their short codes. But before starting, बहुत important चीज मुझे आपको बतानी है. You should know this counterclockwise and clockwise. ठीक है, और मुझे पता है बहुत सारों में आपको पता होगा that what is it, and I know you are pretty smart enough to know about that, but still we are going to quickly revise it, okay? So let us begin learning first clockwise and counterclockwise. Then we are gonna move forward to learn the move notations and their short codes. तो clockwise मतलब होता है how the hand of the clock turns around. तो हम सबने clock देखी हुई है, right? So this is how the clock looks basically. तो of course उसमें numbers होते हैं, but I did not put the numbers. Leave the numbers right now. तो clockwise मतलब how the hand in the clock turns around. तो अब clock जो है वो ऐसे घूमती है. It goes like this, 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 this and reaches back to its position. तो वो right side की तरफ ऐसे circle बनाकर घूमती है, right? So this is what clockwise is. So clockwise is exactly how the clock turns around. और हर move notation के पास जो है एक different type की clockwise होती है. Now coming to anti-clockwise. एंटी-क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप उसको कुछ भी बोल सकते हो. आई फाइंड एंटी-क्लॉकवाइज मोर कंफर्टेबल, सो आई वुड से एंटी-क्लॉकवाइज. तो एंटी-क्लॉकवाइज एकदम ऑपोजिट होता है ऑफ क्लॉकवाइज. सो इट इज द टोटली ऑपोजिट ऑफ हाउ द हैंड इन द क्लॉक टर्न्स अराउंड. तो अब एंटी-क्लॉकवाइज की अगर बात करोगे एंड इट इज ऑपोजिट, सो द एंटी इफ द क्लॉक विल बी एंटी-क्लॉकवाइज, तो फिर वो ऐसे चलेगी लाइक दिस, वो उल्टा जाएगी. वैसे ही मूव नोटेशंस में भी व्हाट क्लॉकवाइज, जैसे ये क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो उसका उल्टा जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा हो जाएगा एंड इट वुड गो लाइक दिस. तो हर मूव नोटेशन का वन विल बी क्लॉकवाइज, वन विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट विल हैपन विद एवरी साइड. So now let us move on to learn the move notations and their short codes. So when I say right, तो फिर आप जो है right side को clockwise घुमाओगे towards the up side, towards the top. When I say right prime, तो फिर आप अपनी right side को anti-clockwise घुमाओगे towards the bottom. Got it? Now when I say left, तो फिर आप लेफ्ट साइड को क्लॉकवाइज घुमाओगे which will be towards the bottom. और जब मैं बोलूंगी लेफ्ट प्राइम, तो फिर आप लेफ्ट साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे which will be towards the top. Okay? Now when I say front, तो फिर आप फ्रंट साइड को क्लॉकवाइज घुमाओगे towards the right side like this. और जब मैं फ्रंट प्राइम बोलूंगी, तो फिर आप फ्रंट साइड को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. नाउ व्हेन आई से बैक, तो फिर आप बैक साइड को जो है क्लॉकवाइज घुमाओगे टुवर्ड्स द लेफ्ट. एंड व्हेन आई से बैक प्राइम, तो फिर आप बैक साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे टुवर्ड्स द राइट. नाउ व्हेन आई से अप, तो फिर आप अप साइड को क्लॉकवाइज घुमाओगे वेयर टुवर्ड्स द लेफ्ट. And
when I say up prime, तो फिर आप अप साइड को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे towards the right, like this. अब जो है last but not the least move is, जब मैं बोलूंगी down, तो फिर you are going to move the down side clockwise towards the right side. And when I say down prime, तो फिर आप down side को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे towards the left. Got it? So I am again repeating. Right is when I move right side towards the top. Right prime is when I move right side towards the bottom. उसका एंटी क्लॉकवाइज मूव. When I जब मैं बोलती हूँ left means you will move the left side towards the bottom. When I say left prime, तो फिर left side को आप up कर दोगे. Front means front side towards right, and front prime means front side towards the left. Back means back side towards the left, और back prime मतलब back side towards the right. Up मतलब up side towards left, and up prime मतलब up side towards right. And last but not the least, down मतलब down side towards right, और down prime मतलब down side towards left. Got it? Now let us learn the short codes of these moves. अब short codes क्यों necessary, क्यों अच्छे होते हैं learn करना? Because when I say right prime, back prime, down prime, up prime and all of that, तो वो थोड़ा confusing हो जाता है, tongue twister बन जाता है बोलने में. And to cut it down, to make it short to speak and make it easy to speak and write, हम यूज करते हैं short codes. Got it? अब short codes होते हैं छोटे, एक alphabet होता है वो, alphabet and a sign. उसमें उसके साथ एक sign भी जुड़ा होता है. So now let us learn the short codes. So now right का short code है R. So we say right as R. And right prime का short code है R prime. We say right prime as R prime. Now अब इनको ना लिखने का भी different style होता है. Let me show you how to write them. So if I want to write the right move, तो फिर जो मैं लिखूंगी एक single caps में R, like this. If I want to write right prime, तो फिर मैं पहले तो ये R अल्फाबेट ही लिखूंगी बड़ा बड़ा, and along with it I will make an apostrophe like this. तो अगर ऐसा apostrophe के साथ कोई भी अल्फाबेट होता है, that means it is prime. ये right prime है, ठीक है? Got it? और right prime मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर किसी भी मूव नोटेशन के साथ प्राइम लगा होता है, means it will move towards the anti-clockwise. And this apostrophe is the sign of the prime move notations. Got it? Let us move on to different short codes now. So let us start with more short codes now. तो मैंने right का बताया था R और right prime का बताया था R prime, R with an apostrophe. Now left का है L, so we call left as L, and we call left prime as L prime, L and apostrophe. Got it? Front का है F, front को we say F, and front prime we say F prime, F with an apostrophe. तो हर prime के साथ जो है apostrophe लगेगी, okay? Back का है B and back prime का है B prime. Up का है U और up prime का है U prime. Down का है D और down prime का है D prime. ठीक है? So this is R, this is R prime, this is L, this is L prime, F, F prime, B, B prime, U, U prime, D or D prime. So here the move
notations and short codes video ends. और I hope कि आपको ये वाली वीडियो helpful लगी हो and you learned something out of this and you learned all the move notations properly. And I am sure कि आपने notes तो बना ही लिए होंगे, क्योंकि because when you create notes it is very easy for you to learn and understand different things. कि अगर आप जरा सा भी भूलते हो ना, look at your notes and you will get to remember anything. लेकिन अभी भी अगर आपके पास कोई doubts रहते हैं 6 sides के ऊपर या move notations के ऊपर और anything at all, then please ask me in the comment section right now या कभी भी जब आप free होगे, and I'll surely try my best to answer them to you as soon as possible. So I'll see you soon in my next video. Till then, take care, bye bye. और next video जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको bonus tips मिलने वाले हैं. Wow!